हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक ITF, inverse trigonometric functions. Okay, and in this topic we continue our exercise 2.2. Okay, I am taking some other most important questions of exercise 2.2. Yes beta, I am taking question. We have to prove tan inverse 1 by 7 plus 2 tan inverse 1 by 3 is equal to pi by 4. Okay, बेटा वैसे हमने इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में किए थे. यस, लेकिन अब देखो इन दिस कंडीशन, यस बेटा, इन दिस कंडीशन वी कांट यूज tan inverse x plus tan inverse y identity. Why? Because of it is 2 tan inverse 1 by 3. So first of all we should solve this term, and as we know 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. Okay, now if we apply this identity here, then we get 2 tan inverse 1 by 3 is equal to tan inverse 2 into 1 by 3 upon 1 minus 1 by 3 whole square. Is that clear? So it is tan inverse 2 by 3 and 8 by 9. मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया. Then tan inverse 9 and 3 cancel out. Okay, so 3 to the 6 upon 8. It will be tan inverse 3 by 4. Is that clear? We put this in place of this. Okay, then tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 3 by 4. Now we can apply identity tan inverse x plus tan inverse y. We know that tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Okay, so here tan inverse 1 by 7 plus 3 by 4 upon 1 minus 1 by 7 into 3 by 4. Can we calculate it? It is 4 plus 21 upon 28 upon here 28 minus 3 upon 28. Okay, then 28 to 28 cancel out and it is 25 and it is also 25. So it is tan inverse 1 which is equal to pi by 4. Okay then, so hence proved. Yes beta. Now our question is sin inverse 5 by 13 plus cos inverse 3 by 5, and we have to prove in terms of tan inverse 63 by 16. बेटा इस क्वेश्चन में इधर साइन इनवर्स टर्म है या हमारे पास cos इनवर्स टर्म है, और फिर प्रूफ क्या करना है इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन वी कन्वर्ट साइन इनवर्स टर्म इनटू tan इनवर्स टर्म एंड cos इनवर्स टर्म कन्वर्ट इन tan इनवर्स टर्म, देन वी कैन अप्लाई tan inverse identity. Yes, first of all in this case sin inverse 5 by 13 let theta, then sin theta is equal to 5 by 13, then in triangle this
suppose that it is theta, then sin theta perpendicular upon hypotenuse, so it is 13, it is 5, so it is 12. Okay, then tan theta is equal to perpendicular upon base means 5 by 12, so we can write it sin inverse 5 by 13 is equal to tan inverse 5 by 12. तो हम लोग बेटा sin inverse 5 by 13 को रिप्लेस कर देंगे tan inverse 5 by 12 से. Similarly for cos inverse 3 by 5 theta हमने सपोज कर लिया, then cos theta is equal to 3 by 5, and in triangle suppose that it is theta, then base upon hypotenuse means, okay, then tan theta is equal to 4 by 3, cos inverse 3 by 5 can be written as tan inverse 4 by 3. In place of this term and this term, we can write this term and this, okay, like that in LHS. Sin inverse 5 by 13 plus cos inverse 3 by 5. Okay, we can replace these terms by tan inverse 5 by 12 plus tan inverse 4 by 3. Now we apply identity of tan inverse x plus tan inverse y. It will be, it is 5 by 12 plus 4 by 3 upon 1 minus 5 by 12 upon 4 by 3. Can we calculate it? Yes, it is tan inverse. Yes, LCM is 36. So LCM to LCM cancel out. Then we get 15 plus 48 upon 36 minus 20. It will be tan inverse 63 upon 16. That will be our answer. Okay then. Yes बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे पास एक्सरसाइज में मिल जाएंगे. Okay, can you calculate these type of questions? Now I am taking next topic. Our next topic is solve the equations for x. बेटा मतलब अब हमारे पास ऐसे x की टर्म में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इक्वेशन गिवन होगी और इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमारे को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. वी यूज आइडेंटिटीज लाइक दैट. इफ आई यूज identity tan inverse x plus tan inverse y here, then we get tan inverse x plus y 1 minus x into y. Is that clear? What is x? This is x minus 2 upon x minus 1. And what is y? This is x plus 2 x plus 1. Here also x minus 2 x minus 1 x plus 2 x plus 1 and it is equal to pi by 4. तो बेटा आप देखो हमें प्रूफ नहीं करना, अब हमारे को क्या करना है, इक्वेशन सोल्व करनी है ना. तो इक्वेशन जब सोल्व करते हैं हम लोग तो दोनों टर्म सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते रहते हैं साथ साथ में. यस, प्रूफ दैट में हम लोग LHS अदरवाइज RHS दोनों में से कोई एक टर्म सोल्व करते थे और दूसरी टर्म पे अप्रोच करते थे. Okay then, now it is tan inverse, taking LCM here, then LCM is x minus 1 x plus 1. So we have x minus 2 x plus 1 x plus 2 x minus 1. Okay, similarly in denominator
x minus 1 x plus 1 LCM, and here x minus 1 x plus 1 minus x minus 2 x plus 2, and it is equal to pi by 4. Okay, now LCM to LCM cancel out, and can we convert tan inverse in this side? So here x square minus x minus 2, मैंने बेटा इसको कैलकुलेट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया. सेम हियर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, अपॉन हियर ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, a माइनस बी प्लस बी वाला आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे हियर tan pi by 4. Okay, and what is the value of tan pi by 4? It will be 1, and it is x to x cancel out, then we have 2x square minus 4 upon x square to x square cancel, then it is 3 and it is 1. So 2x square minus 4 is equal to 3, 2x square is equal to 7, x square is equal to 7 by 2, so x is equal to plus minus in square root 7 by 2. It is our answer. Okay then, can you calculate these type of questions? Yes. Now I am taking one other question based on same topic for practice. In this question there is cos inverse x square minus 1 upon x square plus 1 plus half tan inverse 2x upon 1 minus x square is equal to 2 pi by 3. इस क्वेश्चन में भी हमारे को इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है और x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. लेकिन अब यहां हम लोग कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते. तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लियर किया था कि हम लोग इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस टर्म को भी और इस टर्म को भी. वी पुट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इन प्लेस ऑफ एक्स हियर एंड हियर. ओके, और उस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को पुट करने पर यहां हमारे पास कोई आइडेंटिटी बनेगी ट्रिग्नोमेट्रिक, और उससे क्या होगा, हमारे पास ये टर्म्स थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी, इजी हो जाएंगी. ओके देन, यस. So listen, here if I put x is equal to tan theta, okay, then theta will be tan inverse x cos inverse tan square theta minus 1 upon tan square theta plus 1 and half tan inverse 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Is that clear? And it is equal to 2 pi by 3. Yes. बड़ा सुंदर है. ये कोई आइडेंटिटी हमारे पास हुआ करती थी. Can you learn? एक आइडेंटिटी हुआ करती थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इन 11th क्लास. तो ये कंडीशन हम लोग जो है यहां अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहां tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 है और यहां 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल cos इनवर्स टेकिंग माइनस कॉमन, देन 1 माइनस tan square theta upon 1 plus tan square theta plus, and here we write this same term 1 by 2 tan inverse 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Is that clear? Now it is pi minus cos inverse 1 minus tan square theta
1 plus tan square theta half it is tan 2 theta. Okay, yes beta, and it is also cos 2 theta, so pi minus cos inverse cos 2 theta plus half tan inverse tan 2 theta, and this term we write it continuously same. Okay, then this to this cancel out, this to this cancel out, so we have pi minus 2 theta minus plus 1 by 2 into 2 theta is equal to 2 pi by 3. Now can we calculate it? ये पाई किधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां हमारे पास माइनस थीटा बच गया, सो वी हैव ओनली पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3. सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 2 पाई बाई 3. इट इज ओनली पाई बाई 3. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? tan inverse x. So it is tan inverse x is equal to pi by 3. Then बेटा पाई tan को इधर शिफ्ट कर देंगे, tan pi by 3 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? tan pi by 3 is equal to root 3. So x is equal to under root 3. Is that clear? तो बेटा देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे पास एग्जाम्स में पुट अप हो सकते हैं. ओके, सो वी शुड प्रैक्टिस these types of question also. Okay then, thank you, best of luck.